Hello and welcome to Ambivert Aish. I'm Aishi Jain, your instructor, and we talk about public speaking, effective communication, and personal development on this channel. Thank you so much for tuning into it because your time and attention is highly valued to me. So thank you. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic के बारे में, which is stage fright. Do you have stage fright? Because I did. और exactly यही expression होता था मेरा when I had to speak in front of a large audience or even just a small crowd on stage. अब ये public speaking का सबसे important issue है. That is very common in most of the people. Let me show you how common this is. 37% of population suffer from glossophobia. Glossophobia क्या है? Fear of public speaking. हम लोगों के सामने बात करने से मौत से ज्यादा डरते हैं एंड दिस इज अ फैक्ट पीपल आर स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक देन दे आर स्कैर्ड ऑफ डेथ एंड दीज आर फैक्ट्स 75% पीपल हैव स्पीच एंजाइटी यानी कि इन फ्रंट ऑफ पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग उनकी हार्ट बीट्स इतनी तेज है लाइक दे आर हैविंग अ पैनिक अटैक दिस इज स्पीच एंजाइटी एंड आई हैव सीन दिस विद माय स्टूडेंट्स एज वेल नाउ व्हाई डज दिस हैपन बिकॉज people fear uncertainty and unpredictability कि जो मैं बोल रही हूँ वो या बोल रहा हूँ वो रेलेवेंट है या नहीं पता नहीं सामने वाला इसका क्या मतलब निकाल ले अरे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इट्स ओके इफ यू से समथिंग रॉन्ग वी आर ह्यूमंस बट अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारे सबकॉन्शियस में ही ऐसी है दैट वी ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल एंड वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ ह्यूमंस इंक्लूडिंग मी we are so afraid of being judged that we would rather not express ourselves. And the biggest obstacles are our insecurities and self-doubts. और ये आते कहाँ से you will get to know if you watch till the end of this video. आज के वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है कैसे उन्हें कॉन्कर करना है और क्या टेक्निक्स है बहुत ही सिंपल सी दैट यू कैन फॉलो सो इफ दिस इज intriguing you then please watch till the end. Now let's begin. Up, ask yourself this question: how good am I at these? Trust me, it's all very relevant and connected. Write this down in your notepad if you're doing this course in a serious manner, or you can take digital notes as well. Ask yourself, how good am I at these? Clear pronunciation. Kitna clear hai aapka pronunciation? And this goes for any language. We are talking about public speaking here. हम English की बात नहीं कर रहे. तो अगर आप हिंदी में तमिल में तेलुगु में किसी भी लैंग्वेज में स्पीच दे रहे हैं योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर recently one of my students have given Josh talks in Tamil and I'm so proud and he used to have stage fright as well to the point that he used to sweat his hands while going on stage and now he's a Josh talk speaker so yes it's definitely conquerable दूसरी चीज वॉइस मॉड्यूलेशन नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई कैन टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज बट वॉइस मॉड्यूलेशन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो मैंने आई थिंक अपनी प्रीवियस वीडियोस में थोड़े बहुत बताए हैं देयर इज एम्फेसिस देयर इज इंटोनेशन देयर इज प्रोजेक्शन अब वॉइस मॉड्यूलेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसे एक वीडियो में कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो आई विल मेक मल्टीपल वीडियोस ऑन दिस बट अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं एंड यू वांट टू नो द निटी-ग्रिटीज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन कि कैसे हम इसे बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं टू प्रोजेक्ट ourselves and to conquer stage fright then I would suggest check out the description and enroll into my 21 days challenge because वहां पे हम इसे बहुत डिटेल में एक्टिविटीज के साथ कवर करेंगे that help you improve your voice and take charge of it. Coming to the next point that is body language. Again, like I said that we are going to talk about traits. अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट दैट विल हेल्प यू अ लॉट एज वेल तो बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है दैट स्पीक्स मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन हमारे कंटेंट हमारी वॉइस से भी ज्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है एंड दिस वी आर हैंड्स डाउन क्लियर अबाउट इट सो how good is your body language when you're talking to people when you're on stage when you're dealing with anyone ask yourself in fact chalo let's play a game rate yourself 1 to 10 in each of these categories clear pronunciation में आप 10 में से अपने आप को कितने पॉइंट्स देंगे वॉइस मॉड्यूलेशन में आउट ऑफ 10 एंड बी ऑनेस्ट क्योंकि इस स्केल को ही बढ़ाना हमारा काम है व्हेन वी रेज द स्केल टू 8 9 और 10 वी विल गेट बेटर एट पब्लिक स्पीकिंग अब
Also, make it interesting and give this points in the comments so that I can also see कि किसकी कितनी growth हो रही है. Like comment your rate of scale right now and then learn with me through the course, and at the end of the course comment again कि initially आपका score 3 4 5 था and now it is to 8 9 10. नेक्स्ट इज स्टेज प्रेजेंस. अब स्टेज प्रेजेंस बॉडी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है. अगर आप कोई भी टेडेक्स स्पीकर को देखोगे, दे यूज द स्पेस, दे यूज प्रॉप्स. वो वॉक करेंगे, दे विल यूज देयर होल बॉडी, दे विल यूज डिफरेंट प्रॉप्स. मीन्स कि कोई चीज, इट कैन बी अ बोर्ड, इट कैन बी अ बॉल, इट कैन बी एनी एग्जाम्पलरी थिंग, इट कैन बी पीपीटी ऑल्सो. सो दे यूज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्पेस. इसे हम कहते हैं स्टेज प्रेजेंस, एंड इट इज completely different from body language. Last but definitely not the least is storytelling. कहानी हजारों सालों से इसलिए पॉपुलर है क्योंकि it works. People embrace your content, relate with you emotionally when you're telling a story. For example, I said that I was going in the metro and someone stole my purse. किसी को कुछ फील नहीं हुआ. But now if I give a story, a background to it, that यार मेरी मम्मी का बर्थडे था and I bought a really expensive jewelry for her and it was in my purse and it got stolen. I have no idea what to do. I was saving for so long to give her this gift on her birthday and now it's gone. Did you feel a bit of like ये एक काल्पनिक कहानी थी, but we still feel कि यार. So this is the power of story. आप किसी भी situation को एक story में convert कर दो, people will listen to it more intently. This is again a fact. So quickly, pause the video, rate yourself on all 5 areas and comment it down. And then we will see कि through the course of this teaching that I'm trying to provide here, आप कितना improve कर सकते हैं. Are we good with this? Let's move on. What are my resistances? स्टेज फ्राइट हमारे रेजिस्टेंसेस का ही एक नतीजा होता है. सो इसके पहले कि आई टेल यू, आइदर यू कमेंट डाउन और आफ्टर सीइंग दिस टेल मी इन द कमेंट्स कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस यू हैव. लेट मी सी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग. सो दीज बाय द वे आर ऑल माय रेजिस्टेंस. ये हर एक चीज मेरे अंदर थी या कुछ हद तक अभी भी है, और कुछ ऐसी भी चीजें जो हमेशा होती है, लाइक फियर ऑफ जजमेंट. अब जजमेंट एक ऐसी चीज है जिसका फियर हमेशा थोड़ा या ज्यादा होता ही है. ऑल वी कैन डू इज रेगुलेट इट. और ये बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लाइक हाउ एम आई ड्रेस्ड, हाउ एम आई लुकिंग, इज माई प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, मेरे जेस्चर्स ऑकवर्ड तो नहीं हो रहे, मेरा पोस्चर सही है या नहीं, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही है या नहीं, एम आई यूजिंग द स्टेज करेक्टली. ये सारी चीजें पीपल जज व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी फियर अबाउट. सेकेंड बहुत ही कॉमन है, फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, एंड द होल क्रेडिट गोज टू अवर कंडीशनिंग. स्टार्टिंग टू नाउ हमें मिस्टेक करने की परमिशन ही नहीं दी गई है. दैट्स व्हाई वी आर सो अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक. बस सो अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक कि आधी से ज्यादा चीजें मैंने लाइफ में ट्राई ही नहीं. एंड वी डू द सेम विद पब्लिक स्पीकिंग एज वेल. देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? इम्पोस्टर सिंड्रोम इज बिहेविंग लाइक अनदर पर्सन एंड नॉट बीइंग योरसेल्फ. अगेन गिल्टी ऑफ इट. ये होता है नतीजा पीपल प्लीजिंग का. अगर आपको बचपन से या इवन लाइक इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन ट्रेट. In some way or the other, we all are acting as an imposter if you relate with the game. So, imposter syndrome is something when you're not being your authentic self and you're focused on being or behaving like someone else. ये एक बहुत बड़ा drawback है because it loses your authenticity and then you cannot be a successful public speaker. You can be a good one, but not a successful one. Other things are perfectionism. Again, a big problem with me was perfectionism. Abhi, like you would say, there would be background noise. जैसे मैं fumble कर रही हूँ, it's all okay with me now. But earlier, एक तो fear of making mistake, which leads to perfectionism. कि हर चीज perfect होगी तभी कुछ start करेंगे. Voice एकदम perfect बोलना आ जाएगा तभी start करेंगे. जब तक practice ही नहीं करोगे, voice modulation better होगा कैसे? So leave perfectionism right now. Then negative past experiences, this is again a big one. कि बचपन में कभी कहीं हमने स्टेज पे बोलने की कोशिश की और वो बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा, सबने बहुत मजाक उड़ाया and we stuck it to a brain. This also leads to stage fright. Fear of forgetting.
अब ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि हाँ, अगर बीच स्पीच में आप भूल जा रहे हो तो इट्स अ प्रॉब्लम। बट जो सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर्स होते हैं दे नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, जिसकी वजह से फियर ऑफ फॉरगेटिंग नहीं होता, कि अगर आप कुछ भूल भी जा रहे हैं यू कैन स्टिल टर्न द सिचुएशन अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज वन ऑफ द पब्लिक स्पीकर हु वाज गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेज, ही लिटरली फेल डाउन। बट उठ के उसने क्या बोला कि यही होता है लाइफ में, यू फेल डाउन यू गेट अप, यू अगेन फेल डाउन यू गेट अप अगेन एंड यू कंटिन्यू। तो उसने अपनी स्पीच की ब्रेकेज को ही उस अपना पावर पॉइंट बना दे। So this is how you convert fear of forgetting to improvisation. Last, again a big one, comparing oneself to others. You're comparing your day one journey with someone's day 90 or maybe 4 months, 6 months, 1 year journey. So abhi agar aap start kar rahe ho, don't compare yourself with the speakers, the professional speakers. Give yourself time and go through the journey. Up quickly, take your notepad एंड नोट डाउन कि इनमें से कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस आपके अंदर अभी करेंटली है और कितनी इंटेंसिटी पे है। अगेन मार्क दिस ऑल्सो, 1 to 10, लाइक फियर ऑफ जजमेंट कितना है, 6, 7, 8, 10। फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक कितना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कितने रेट पे है, एंड टाइप इट इन द कॉमेंट सो दैट आई कैन नो एंड हेल्प यू अकॉर्डिंगली। ऑल्सो रेट ऑन दिस, अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है कॉमेंट दैट एज वेल सो दैट आई कैन एड्रेस दैट, यस दिस इज ऑल्सो एन इशू। Now, how to conquer these resistances? यही की सवाल जो आप जानना चाह रहे थे इस वीडियो को देखने की स्टार्टिंग पे। हाउ डू यू कॉन्कर दिस? लेट्स मी शो यू। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई योर फियर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला पॉइंट आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, बिकॉज नाउ यू नो, आपने अभी या तो कमेंट किया है या अपने नोटपैड में लिखा है कि आपके फियर्स क्या क्या हैं। सो यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड योर फियर्स। अब अगला स्टेप क्या है? रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक यू स्टार्टिंग अ जर्नी टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, स्टार्ट आप यहीं से करेंगे कि यू शुड बी फेमिलियर विथ योर वॉइस। जब तक आप अपनी वॉइस को, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विथ पीपल, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स रेजिस्ट टू डू दिस। वो बाकी सारी एक्टिविटीज कर लेंगे, सारे हैबिट ट्रैकर्स चेक होते हैं, लेकिन बस ये एक चीज दे मिस आउट। क्यों? because people, I don't know why this is, because I really like recording my voice. This is an exception with me, I guess. But recording your voice then listening to it helps you a lot in a lot of things. एक तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे आपकी कमियां खामियां है, कहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन अच्छा नहीं है, कहाँ और आप पॉज ले सकते हो, कितनी सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड यू गेट फेमिलियर विथ योर वॉइस। अगर आपको खुद अपनी वॉइस बोलते हुए पसंद नहीं आ रही है तो कोई और आपको क्यों सुनेगा, राइट? सो इफ यू आर स्टिल इग्नोरिंग टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, प्लीज स्टार्ट। अंकुर वारिकू जी बोल बोल के थक गए हैं कि इफ यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर और अ गुड कम्युनिकेटर और अ पब्लिक स्पीकर, रोज या तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो ऑफ इट, एटलीस्ट 30 seconds to 60 seconds. That's all we are asking, literally. Next is affirmations. Now, this has made a huge difference because it is a part of a positive self talk. When you're repeating statements and you're making your mind to believe it, then it becomes an affirmation. और ये एक neurological technique है. So if you're avoiding this, maybe you will take a little longer, even with more efforts. If you're repeating the affirmations, and don't worry, इसके लिए भी आपको proper video मिलेगा, proper audio मिलेगा. And if you're in my personal WhatsApp group, then you're getting a lot of more extra things along with this. So I would suggest to check out the description and join the group if you have not joined. It's totally free. I'm not charging anyone anything. So yes, start with affirmations. And then the most important part, seek feedback. बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं जो सेल्फ अवेयर होते हैं, they can self regulate, but most of us need a mentor or a friend or an accountability partner to tell you that this is where you're lacking, ये अच्छा नहीं है. Like even till now, whatever webinars I record or even the videos, I send it to my accountability partners to ask for feedback कि कहाँ कहाँ मैंने mistake किया, and they give me honest feedback. So this is the power of accountability. So seek feedback, either join a group or join a mentor.
Last but not the least, use proper techniques to handle your nerves. Stage fright, stage fear. फियर क्या है? आपके नर्वस सिस्टम में हलचल, यानी कि आपके नर्व्स, आपके न्यूरॉन्स आपको बोल रहे हैं कि ये बहुत डरावनी सिचुएशन है, भागो यहाँ से. सो यू नीड टू हैव प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल टेक्निक्स टू हैंडल योर नर्व्स. अब ये मेडिटेशन हो सकता है. इट कैन बी लाइक व्हाट आई यूज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ वर्क, Ho'oponopono, and some basic NLP techniques that I learned from my mentor, Mr. Mitesh Khatri. Okay, so these are the combination of techniques that I follow to manage my nerves before anything. Like starting with when I used to record videos, तभी ये होता था that I used to get very conscious about this, about that, background noise, how am I looking, this. Now I'm like, ठीक है, mood हुआ है, content ready है, record, post. So this comes with practice also. And then, of course, the nerves help a lot. So you should have some basic techniques. Like in my community, I also give them a lot of different kinds of meditations. Of course, the Ho'oponopono thing. So these are the things that you should be having along with the basic techniques of public speaking and everything that we discussed. So these are the 5 pointers that you can use to conquer your stage fright. All of them are tried and tested and implemented by me and so many of my students as well. So, yes, this was my value for you in this free course today. I hope that it was useful. And please do let me know in the comments कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं cover करूं in this course. And yes, this is about our video today. So thank you so much for listening. You can check out the description if you want to enroll in my 21 days challenge, जहाँ पे I dive deeper into all the aspects of effective communication, content creation, and public speaking, of course. This is my Instagram account, ayushi.jan.97. Please do follow. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe and put the notifications on, because I also have an amazing podcast जिस पे मैं बहुत ही amazing लोगों के साथ connect कर रही हूँ. I guess it's a blessing and it's fun. I'm loving the podcast. It's called Convo with Ash, so do check that out. I have a separate playlist for it. And yes, comment down your key learnings from this video. And if you have not seen the previous videos, please go and check them out as well. I will see you in the next one with some more amazing things about effective communication, public speaking, and personal development. Until next time, love, nos vemos. Keep learning, keep growing, and never give up.